Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're well. I've just got a very quick tutorial for you today. This is a hair tutorial, really simple bun with a flower garland around it. So I just started off with the hair, I've put it up into a ponytail and I've kept it as a center part and I'm just smoothing over the hair now. So एक छोटा सा बस ट्यूटोरियल है, सिंपल सा जूरा जो पीछे होता है उसके अराउंड जो फ्लावर गार्लैंड हम लगाते हैं. सो बस सिंपल से पोनीटेल किया, आगे से सेंटर पार्टिंग कर दिया एंड इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया. यहाँ पे अभी मैं इसका ज्वेलरी लगाऊंगी एंड टिक्का वगैरह एंड देन सिंपल सा एक बंद करना है. बहुत ही क्विक ट्यूटोरियल होगा ये वाला. So I'm just adding on my jewelry first and getting the tikka on. So I'm just going to pin that to the back. It was quite a big tikka, so we're just pinning it to the back. So once I've done that, the back of the hair, all I want to do is have like a very small jura. So there's a few ways you can do this, but I just split it into two, wrap one section round and then I wrap the second section round as well. So I wanted it quite small, not too big, not too, so I wanted it a little bit on the flat side as well. So I'm using my pins to kind of like flatten it a little bit as well. And then I'm going to wrap my hairpiece around it. So बस जूरा छोटा सा कर रही हूँ. दो तीन डिफरेंट तरीके हैं ये करने के लिए. सारे बाल भी एक ही दफ़ा लेके जा सकते हो और मैंने दो में स्प्लिट करके एक घुमा के लेके गई हूँ, फिर दूसरा कर रही हूँ एंड देन पिन लगा के इसको फ्लैट करके इसको जूरा को पिन कर रही हूँ. एंड देन यहाँ पे बस मैं अपने जो है फ्लावर पीस है वो लगा लूँगी. फ्रेश फ्लावर यूज़ कर सकते हैं. ये मेरे पास है आर्टिफिशियल फ्लावर का एक पड़ा हुआ था, ये मेरा बहुत काम आ जाता है जैसे शूट्स वगैरह पे या ब्राइड्स के लिए एज वेल जब कुछ नहीं होता. तो इसको लिटरली पिन करके जैसे लड़ी सी है लंबी सी एंड घुमा के इसको ले जाऊँगी. पूरे बन को भी कवर कर सकते हैं या अब छोटा सा जैसे आज मैं करूँगी बन थोड़ा सा जूरा नज़र आ रहा होता है एंड देन इसको घुमा के लेके जा रही हूँ. So you can add fresh flowers here and kind of like in a in lots of different ways and create a really nice bun as well. I've got this artificial piece. I actually got this from, I don't know if you pronounce it Shine or Shein, but I think it was probably about £2, something like that, but it really comes in handy. So all I've done is taken it round. Now you can take this to cover the whole bun at the back as well, or you can do it so that you can actually see a little bit of the jura, which is what I've done today. So I've added this on. I'm just going to adjust it from the front so that we can actually see the same amount from each side and pin it if I need to. And literally that's it. And it's such a simple hairstyle but so effective. We've got the jewelry on, did the final look, and this was basically the hairstyle. So I hope you've enjoyed this. बस बेसिकली इसको आगे से मैंने ठीक कर दिया कि दोनों साइडों से सही नज़र आए. सिंपल सा हेयर स्टाइल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है. अगर आपको हाइट वगैरह नहीं चाहिए एंड बहुत क्विक है, बहुत इजी है. एंड आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया. ये हमारा फाइनल लुक था. इंशाल्लाह आपको पसंद आया. प्लीज़ इसको लाइक एंड कमेंट कर देना एंड इंशाल्लाह दोबारा ट्यूटोरियल लेके होंगे और फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.